सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। Krishna, his face compassionately reflecting the anguish of his young companion, understanding his torment, speaks gently. You grieve for those who are not worthy of your grief, although you speak of wisdom. The wise grieve neither for the living nor for the dead. There has never been a time when I was not, nor you, nor all here. There will not be a time after this when we shall cease being. Realize that which pervades all cannot be destroyed. Nothing can vanquish this immutable force. O mighty armed, understand that this being that is perpetually born perpetually dies, and do not grieve. Shri Bhagavan Uvacha Ashocha Nanvashocastvam Pragyavadascha bhashase Gatasuna Gatasuncha Nanushocanti Pandita Natvevaham Jatunasam Natvam Neme Janadhipaha Nachayvana Bhavishama Sarve Vayamata Param Avinashi Tu Tadvidhi Yena Sarvamidam Tatam Vinashama Vyayasyasya Nakaschit Kartumaharati Atha Chainam Nityajatam Nityam Vamanyasmritam Tathapi Tvam Mahabaho Naivam Shochitu Manasi. For the one that is born, death is a certainty, as birth is a certainty for the one that dies. Do not grieve for the unavoidable. O Partha, knowing that the self is indestructible, eternal, unchanging, how can one slay it or cause its destruction? Jatasya hi dhruvo mrityurdhruvam janmamritasya cha tasmad Natvam shochitu marasi Veda Veda Vinashinam Nityam Myam Enam Ajma Vyayam
Consider your duty. Being a Kshatriya, a warrior, you can achieve no greater glory than in fighting a necessary battle. The Kshatriyas are fortunate to be given the opportunity of war, O Partha, for in fighting it, the door of heaven opens for them. Prepare yourself to fight by treating pleasure, pain, gain, loss, victory, and defeat on an equal basis. Your struggle is for righteousness. You commit no crime. Concentrate on Karma Yoga. Do what you must. Do not be swayed by the dictates of emotion. Ignore the ties that bind you to those you see before you. Keep your mind tranquil, whether you succeed or fail. This is yoga. But if you walk away, leaving what must be done undone, you are failing in your purpose, your duty. सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो संगम त्याक्त्वा धनञ्जया सिद्धा सिद्धाय समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते अथ चेत्त्वमिमं धार्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. Aspire in your intelligence to the divine. In doing so, you will throw off the trappings of both good and evil. Yoga is the conquest of mind. Strive towards it. Peace of mind, the calm of understanding, can come only by freeing yourself from desire and wanting, by forgetting the concept of possession, of mindness. बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगो कर्मसु कौशलम् विहाय कामन्यया सर्वान् पुमान्
But Arjuna is confused. Why is this man, the noblest among them, condoning and urging violent and senseless destruction whilst exhorting the virtues of peace and understanding? Krishna's lips curve in a smile as he senses Arjuna's hesitation and sees the conflicting thoughts mirrored on the frank countenance before him. Laying a hand on Arjuna's shoulder, he turns the young, distraught face towards him and explains. The one who can control the mind's emotion and undertake action without attachment in the cause of duty is superior. Work is unavoidable. Neither physical nor mental life can be sustained without action. Do what is to be done without attachment. You will attain the heights. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद् Lesser beings look up to greater ones and imitate them. If I would no longer work, the universe would be in chaos. I would be responsible for the collapse and the destruction of these beings. The great, the wise, should lift the minds of the ignorant out of the abyss of attachment to action. Embodying the spirit of Karma Yoga, the enlightened must set an example to those still struggling. Yadyada charati shrestha statadeve taro jana Sayat pramanam kurute lokastadanu vartate utside yurime loka na kuryam karma che
Krishna, standing before Arjuna, all his grace and dignity evident in every line, every contour of his face and body, asserts, I come incarnate, O Bharata, when righteousness is on the decline and unrighteousness rears its ugly head, breeding horror. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhyutthanamadharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkratam dharma संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं, क्या उसे आप प्राप्त कर सकते हैं? श्रद्धा सबसे पहली जरूरत होती है दोस्तों। किसी भी चीज को हासिल करना हो तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है, और श्रद्धा कभी झूठी नहीं हो सकती। या वो होती है या नहीं होती, इसे आप जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। यही बात कृष्ण अर्जुन से समझाते हुए कह रहे हैं, हे परंतप, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जिन पुरुषों में धर्म के प्रति, कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते, बस चक्कर काटते रहते हैं। दोस्तों, हमें खुद अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या हम भी चक्कर काट रहे हैं? जय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। चोरों को हाथी घोड़ा, चोरियों को पाल की, चोरियों को पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की। करके सिंगार चली लेके गगरिया, पनघट पे चोरी चोरी जाए रे, हो गोरी पनघट पे चोरी चोरी जाए रे। करके सिंगार चली लेके गगरिया, पनघट पे चोरी चोरी जाए रे, हो गोरी पनघट पे चोरी चोरी जाए रे। डोल रहा मेरा मन, डोल रहा हो सखी, डोल रहा मेरा मन, डोल रहा हो सखी, डोल रहा। बांसुरी की तानों से प्यार कोई प्राणों में घोल रहा,
गोरी झूम रही, गोरी झूम रही हो, गोरी झूम रही। शाम बसे नैनन में बावरी हो, कुंजन में झूम रही। शाम बसे नैनन में बावरी हो, कुंजन में झूम रही, झूम रही। होठों पे गीत लिए, तन मन में प्रीत लिए, होठों पे गीत लिए, तन मन में प्रीत लिए। मोहन के रंग रंगीन सारी नगरिया, देखे तो चांदनी लजाए रे, हाय देखे तो चांदनी लजाए रे। यमुना के पार कहीं बाजे बंसुरिया, झूमे पिया लहराए रे। हरियावन की आवाज आज सुनी मैं, हरियावन की आवाज आज सुनी मैं, हरियावन की आवाज आज सुनी मैं, हरियावन की आवाज 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 आज सुनी मैं, हरियावन की आवाज। महलन चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, महलन चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, महलन चढ़ी चढ़ी जो मोरी सजनी, कब आवे महाराज आज सुनी मैं, हरियावन की आवाज आज सुनी मैं, हरियावन की आवाज। दादुर मोर पपिहा बोले, कोयल मधुरे साज। दादुर मोर पपिहा बोले, कोयल मधुरे साज। कोयलिया
Krishna, his face compassionately reflecting the anguish of his young companion, understanding his torment, speaks gently. You grieve for those who are not worthy of your grief, although you speak of wisdom. The wise grieve neither for the living nor for the dead. There has never been a time when I was not, nor you, nor all here. There will not be a time after this when we shall cease being. Realize that that which pervades all cannot be destroyed. Nothing can vanquish this immutable force. O mighty armed, understand that this being that is perpetually born perpetually dies, and do not grieve. Shri Bhagavan Uvacha Ashocha Nanvashocastvam Pragyavadascha bhashase Gatasunscha nanushocanti pandita natvevaham jatu nasam natvam neme janadhipaha nachaivana bhavishama sarve vayamata param avinashi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam vinashava vyayasyasya na kaschit kartumaharati atha chainam nityajatam nityam vamanyase mritam tathapi tvam mahabaho naivam shochitu manasi. For the one that is born, death is a certainty, as birth is a certainty for the one that dies. Do not grieve for the unavoidable. O Partha, knowing that the self is indestructible, eternal, unchanging, how can one slay it or cause its destruction? Jatasya hi dhruvo mrityurdhruvam janmamritasya cha tasmad natvam shochitu marasi veda vinashinam nityam yat enamajmavyayam katham sah purushah parthakam ghatayati han
consider your duty. Being a Kshatriya, a warrior, you can achieve no greater glory than in fighting a necessary battle. The Kshatriyas are fortunate to be given the opportunity of war, O Partha, for in fighting it, the door of heaven opens for them. Prepare yourself to fight by treating pleasure, pain, gain, loss, victory, and defeat on an equal basis. Your struggle is for righteousness. You commit no crime. Concentrate on Karma Yoga. Do what you must. Do not be swayed by the dictates of emotion. Ignore the ties that bind you to those you see before you. Keep your mind tranquil, whether you succeed or fail. This is yoga. But if you walk away, leaving what must be done undone, you are failing in your purpose, your duty. क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो Sangam tyaktva dhananjaya siddha siddhaya samo bhutva samatvam yoga uchyate atha chettvamimam dharmyam sangramam na karishyasi tata swadharmam kirtim cha hitva papamavapsasi. Aspire in your intelligence to the divine. In doing so, you will throw off the trappings of both good and evil. Yoga is the conquest of mind. Strive towards it. Peace of mind, the calm of understanding, can come only by freeing yourself from desire and wanting, by forgetting the concept of possession, of mindness. बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगो कर्मसु कौशलम् विहाय कामन्यया सर्वान् पुमान्
But Arjuna is confused. Why is this man, the noblest among them, condoning and urging violent and senseless destruction whilst exhorting the virtues of peace and understanding? Krishna's lips curve in a smile as he senses Arjuna's hesitation and sees the conflicting thoughts mirrored on the frank countenance before him. Laying a hand on Arjuna's shoulder, he turns the young, distraught face towards him and explains. The one who can control the mind's emotion and undertake action without attachment in the cause of duty is superior. Work is unavoidable. Neither physical nor mental life can be sustained without action. Do what is to be done without attachment. You will attain the heights. Yastvindriyani manasa niyamyar bhatirjuna karmendriye karmayogamasakta savishishate he yastvindriyani manasa niyatam kuru karma tvam karmajayo yakarmana sharir yatrapi chatena prasiddhayed Lesser beings look up to greater ones and imitate them. If I would no longer work, the universe would be in chaos. I would be responsible for the collapse and the destruction of these beings. The great, the wise, should lift the minds of the ignorant out of the abyss of attachment to action. Embodying the spirit of Karma Yoga, the enlightened must set an example to those still struggling. Yadyada charati shrestha statadeve taro jana sayat pramanam kurute lokastadanu vartate utside yurime loka na kuryam karma chedaham sankarasya chakartasyamupa hanya mima praja na buddhi bhedam janayed jnanam karma sanginam joshayed
Krishna, standing before Arjuna, all his grace and dignity evident in every line, every contour of his face and body, asserts, I come incarnate, O Bharata, when righteousness is on the decline and unrighteousness rears its ugly head, breeding horror. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhyutthanamadharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkratam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Krishna, his face compassionately reflecting the anguish of his young companion, understanding his torment, speaks gently. You grieve for those who are not worthy of your grief, although you speak of wisdom. The wise grieve neither for the living nor for the dead. There has never been a time when I was not, nor you, nor all here. There will not be a time after this when we shall cease being. Realize that that which pervades all cannot be destroyed. Nothing can vanquish this immutable force. O mighty armed, understand that this being that is perpetually born perpetually dies, and do not grieve. Shri Bhagavan Uvacha Ashocha Nanvashochastvam Pragyavadascha bhashase Gatasuna Gatasuncha nanushocanti pandita natvevaham jatu nasam natvam neme janadhipaha nachaiva Shama sarve vayamata param avinashi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam vinashava vyayasyasya nakaschit atha chainam nityajatam nityam vamanyase mritam tathapi tvam mahabaho naivam shochitu manasi. For the one that is born, death is a certainty, as birth is a certainty for the one that dies. Do not grieve for the unavoidable. O Partha,
knowing that the self is indestructible, eternal, unchanging. How can one slay it or cause its destruction? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम् जन्मामृतस्य च तस्माद् न त्वं शोचितुमर्हसि वेदा विनाशिनं नित्यं घातयति हन्तिकं जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम्. Consider your duty. Being a Kshatriya, a warrior, you can achieve no greater glory than in fighting a necessary battle. The Kshatriyas are fortunate to be given the opportunity of war, O Partha, for in fighting it, the door of heaven opens for them. Prepare yourself to fight by treating pleasure, pain, gain, loss, victory, and defeat on an equal basis. Your struggle is for righteousness. You commit no crime. Concentrate on Karma Yoga. Do what you must. Do not be swayed by the dictates of emotion. Ignore the ties that bind you to those you see before you. Keep your mind tranquil, whether you succeed or fail. This is yoga. But if you walk away, leaving what must be done undone, you are failing in your purpose, your duty. Yadrichayajopapannam svargadvaramapavratam sukhinah kshatriyah partha labhante yuddhamitrisham sukha dukhe same कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते अथ चेत्त्वमिमं धार्म्यं सङ्ग्रामं न करे
in your intelligence to the divine. In doing so, you will throw off the trappings of both good and evil. Yoga is the conquest of mind. Strive towards it. Peace of mind, the calm of understanding, can come only by freeing yourself from desire and wanting, by forgetting the concept of possession, of mindness. But Arjuna is confused. Why is this man, the noblest among them, condoning and urging violent and senseless destruction whilst exhorting the virtues of peace and understanding? Krishna's lips curve in a smile as he senses Arjuna's hesitation and sees the conflicting thoughts mirrored on the frank countenance before him. Laying a hand on Arjuna's shoulder, he turns the young, distraught face towards him and explains. The one who can control the mind's emotion and undertake action without attachment in the cause of duty is superior. Work is unavoidable. Neither physical nor mental life can be sustained without action. Do what is to be done without attachment. You will attain the heights. Lesser beings look up to greater ones and imitate them. If I would no longer work, the universe would be in chaos.
I would be responsible for the collapse and the destruction of these beings. The great, the wise, should lift the minds of the ignorant out of the abyss of attachment to action. Embodying the spirit of Karma Yoga, the enlightened must set an example to those still struggling. Yadyada charati shrestha statadeve taro jana sayat pramanam kurute lokastadanu vartate janayed jnanam karma sanginam joshayed sarva karmani vidwan yuktah samacharan Krishna, standing before Arjuna, all his grace and dignity evident in every line, every contour of his face and body, asserts, I come incarnate, O Bharata, when righteousness is on the decline and unrighteousness rears its ugly head, breeding horror. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhyutthanamadharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे,
अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है दोस्तों। कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है।
तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अरे अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी। दृग से बहा के पानी, दृग से बहा के पानी, दृग से बहा के पानी, दृग से बहा के पानी। जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता। है नेह की निशानी, है नेह की निशानी, है नेह की निशानी, है नेह की निशानी। अब रो रहा हठी दिल, अब रो रहा हठी दिल, अब रो रहा हठी दिल, अब रो रहा हठी दिल। पहले कहा न माना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। परवाह नहीं है तन की, परवाह नहीं है तन की, परवाह नहीं है तन की, परवाह नहीं है तन की। बदली है गति नयन की, बदली है गति नयन की, बदली है गति नयन की, बदली है गति नयन की। सुनता नहीं हठी दिल, सुनता नहीं हठी दिल, सुनता नहीं हठी दिल, सुनता नहीं हठी दिल। गम है खुराक मन की,
सताती, जब याद है सताती, जब याद है सताती, जब याद है सताती, फटती है हाय छाती, फटती है हाय छाती, फटती है हाय छाती, फटती है हाय छाती, रो रो के भेजता है, 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 उस बेनिशा को पाती, उस बेनिशा को पाती, उस बेनिशा को पाती, उस बेनिशा को पाती, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, उनका पता ठिकाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। यह प्रेम पथ अगम है, 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 क्या भटकने का गम 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 है, दुनिया को हिला देंगे, दुनिया को हिला देंगे, दुनिया को हिला देंगे, दुनिया
में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में है मिल जाना। 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 शाम तेरी लगन में मगन हो के मन, शाम तेरी लगन में मगन हो के मन कर रहा है तुम्हारा ही हर पल भजन, कर रहा है तुम्हारा ही हर पल भजन। शाम तेरी लगन में मगन हो के मन, शाम तेरी लगन में मगन हो के मन। दीन बंधु दयालु हमारे, दीन बंधु दयालु हमारे, रूप अद्भुत प्रभु सब तुम्हारे, रूप अद्भुत प्रभु सब तुम्हारे। जग के स्वामी तुम्ही, अंतर्यामी तुम्ही, जग के स्वामी तुम्ही, अंतर्यामी तुम्ही, पूरी करते हो भक्तों की कामना, पूरी करते हो भक्तों की कामना। शाम तेरी लगन में मगन हो के मन, शाम तेरी लगन में मगन हो के मन। नंद लाला नजर में हमारी, नंद लाला नजर में हमारी, छवि सुंदर बसी है तुम्हारी, छवि सुंदर बसी है तुम्हारी। तेरे पावन चरण कष्ट करते हरण, तेरे पावन चरण कष्ट करते हरण, करते भक्ति से हम तेरी वंदना, करते भक्ति से हम तेरी वंदना। शाम तेरी लगन में मगन हो के मन, शाम तेरी लगन में मगन हो के मन।
सब मिटाते 84 के फेरे, सब मिटाते 84 के फेरे। प्रभु अंधेरा हरो अब सवेरा करो, प्रभु अंधेरा हरो अब सवेरा करो। आए दर पे तुम्हारे दुख भंजना, आए दर पे तुम्हारे दुख भंजना। श्याम तेरी लगन में मगन हो के मन, श्याम तेरी लगन में मगन हो के मन। कर रहा है तुम्हारा ही हर पल भजन, कर रहा है तुम्हारा ही हर पल भजन। श्याम तेरी लगन में मगन हो के मन, श्याम तेरी लगन में मगन हो के मन। श्याम तेरी लगन में मगन हो के मन, श्याम तेरी लगन में मगन।